Hello, hi everyone. Very good evening to all of you, those who are watching this particular session. Uh, just let me tell you that what the session is going to be all about. So, we are actually going to discuss what all things we can actually do in order to become a placement and I would say internship, or I would say to how to crack those particular things. We'll try to understand each and everything in depth today. Okay? So I guess we can get started and let's see what all things are there that you guys can do and how you can master. So myself, Kartik Mathur, I am one of the instructor here at Coding Blocks, and I currently lead academics part of the Coding Blocks. So do let me know if you guys can listen to me and you guys are able to hear me. तो एक बार मेरे को जरूर बताना. Just let me know and let me just change the screen as well. Just let me know if I'm audible and everything is fine. So we are about to start with the today's session. Uh, okay, so Neon is saying, please make the recording of the session available on channel. I am currently out now. Okay, ठीक है. तो हम आपको ये recording provide कर देंगे. Hello Saurabh, I am good. How are you, Saurabh? ओके says you are audible. ठीक है. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, दैट इज हाउ यू कैन क्रैक प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन. देखो सब लोगों का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सीजन आ रहा है एंड यू ऑल मस्ट बी वरीड अगर आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट है. इफ यू आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट इट देन या तो तुम्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन के बारे में पता ही नहीं है, या तुम्हें पता है बट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. तुम्हें लगता है ठीक है यार जैसे होगा हो जाएगा, हमें उतना कुछ टेंशन लेने वाली नीड नहीं है. ठीक है, बट दैट्स नॉट हाउ दिस थिंग वर्क्स. हमें एक्चुअली में समझना है कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप वाली चीजें आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. ठीक है, तो ये समझना आप सब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, यस यू कैन आस्क क्वेश्चंस हियर सौरभ एंड हेलो निर्मल. सो वी विल स्टार्ट एंड विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे कि हम क्या क्या कर सकते हैं प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप को लेके. और जो जो चीजें आप लोगों के डाउट्स हैं, यू शुड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. तुम्हें प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड बस जो जो चीजें पूछनी है तुम पूछ सकते हो, और जो जो तुम्हारे डाउट्स है यू कैन आस्क. एंड मैं तुम्हें पूरा एक प्लान बताऊंगा व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट. तो क्या करना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी फॉर एवरीवन जो एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में जा रहे हैं सीजन में, या जो जाना चाहते हैं और अभी उनका टाइम है कुछ. ठीक है, तो you can ask each and every question over here itself. ठीक है, तो we are going to talk about the placements and internships. okay, तो placements and internships के बारे में हमें यहाँ पे आज बात करनी है. और तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं feel free to ask, okay, those doubts. So let us get started with those things. And final year students के लिए जो तुम लोग बोल रहे हो प्लान क्या होना चाहिए, I'll tell you each and everything. देखो सबसे पहले जो जरूरी चीज है समझना कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में दोनों में ना कि कौन कौन हमारे राउंड्स होते हैं, किस किस तरह के राउंड्स होते हैं, क्या क्या चीजें बच्चे पूछते हैं, बच्चों से पूछी जाती हैं. तो देखो सबसे पहले हम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के राउंड्स के बारे में समझते हैं, सिंस देयर आर मेनी जिनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से राउंड्स होते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो जो पहला राउंड होता है ना, सबसे पहले देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा एक एप्टीट्यूड प्लस वर्बल रीजनिंग का राउंड हो जाए. ठीक है, ये वाला राउंड होना इज क्वाइट कॉमन. हो सकता है कई कंपनीज ना लें ये वाला राउंड, बट हो सकता है कि ये वाला राउंड लिया जाए. तुम जैसे कॉलेज से हो और तुम चीजें पूछ रहे हो. तो एम आई नॉट ऑडिबल? मेरी ऑडियो नहीं आ रही आप लोगों को? प्लीज टेल मी. मेरी ऑडियो सुनाई नहीं दे रही किसी को? आई थिंक आई एम ऑडिबल. आई गेस आई एम ऑडिबल. अगर नहीं आ रही तो प्लीज लेट मी नो. Scorpion is saying no audio. Okay, I am audible, Omkar. Sir, your audio is little bit. ठीक है, तो अब जो भी है ऐसी ही है. देखो सबसे पहले एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग का राउंड होता है. जो सेकंड राउंड होता है ना हमारा, सेकंड राउंड इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज टेक्निकल राउंड. ठीक है,
तो अब हम इस टेक्निकल राउंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड इज समथिंग विच इज द इंटरव्यू राउंड। अब हो सकता है कि कई लोग बोले कि यार टेक्निकल राउंड कितने होते हैं, तो देयर इज अ चांस कि ये आपके 1 से लेकर 3 तक के राउंड्स हो सकते हैं। इंटरव्यू राउंड्स कैन आल्सो बी वेरी, मतलब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। हो सकता है 1 से लेकर 2 राउंड्स हो सकता है 1 से 3 हो, तो दिस डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स होता है और सबके लिए सेम होगा, तो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग दिस राउंड वेरीज। तो हमारा जो फोर्थ राउंड होता है, फोर्थ राउंड इज एचआर राउंड, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स राउंड होता है। इसके अंदर आपसे टिपिकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप जा रहे हो अप्लाई करने, व्हाट दैट कंपनी इज ऑल अबाउट, और वो कंपनी किस बारे में काम करती है, उस कंपनी के अंदर आप क्यों जाना चाहते हो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो इस टाइप के जेनरिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये वाला राउंड भी क्रूशियल होता है, बट ना इसके अंदर मेन चीज होती है कि हर राउंड ना एलिमिनेटरी राउंड होता है। फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड पे आप तभी जा सकते हो जब आप फर्स्ट राउंड क्लियर करो, एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल द राउंड्स। हर राउंड एक एलिमिनेटरी राउंड होता है, और हर राउंड में आप तभी नीचे जा सकते हो जब आप एक राउंड को क्लियर करते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड। दिस थिंग इज ऑफ कोर्स व्हिच इज वेरी क्रूशियल। मेन जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए चीजें को टारगेट करना है वो होता है ये वाला राउंड। ठीक है, टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड के अंदर जो आपसे पूछा जाता है दैट इज द कोडिंग स्किल्स। आपके कोडिंग स्किल्स को यहाँ चेक किया जाता है, और कोडिंग स्किल्स के अंदर स्पेसिफिकली जो चीज आती है दैट थिंग इज कॉल्ड एज डीएसए या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो अब जो हम ये बात बता रहे हैं, जैसे इसका क्वेश्चन है विवेक शर्मा इज आस्किंग इज दिस फॉर नॉन आईटी बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स जो हमारे आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, और इफ यू आर नॉन आईटी स्टूडेंट, मतलब अगर आप हो लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, कोई सिविल से है, कोई मैकेनिकल से है, कोई भी ब्रांच हो सकती है। इफ यू आर फ्रॉम एनएसआईटी आईसी, हाँ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है, आपको कंपनीज उतनी अपॉर्चुनिटीज हो सकता है ना दे, बट अगेन दैट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता। तो अगर तुम आईटी कंपनी से हो या तुम नॉन आईटी कंपनी से हो, बोथ ऑफ देम कैन अपीयर फॉर द आईटी प्लेसमेंट्स। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप नॉन आईटी से हो, ठीक है, और आप आईटी कंपनी में बैठ रहे हो, तो आपके रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन आईटी प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं। ठीक है, नॉन आईटी के प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर। अगर वो लिख के जाओगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग सिलेक्टेड। इस चीज का बस ध्यान रखना। अब प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें आईटी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कुछ बेनिफिट होगा। तो अक्षत राय इज आस्किंग इज दिस फॉर टियर 3 आल्सो। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये टियर 3 के लिए नहीं होता, तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द रियलिटी। टियर 1 और टियर 3 इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, टियर 1 कॉलेज किसे कहते हैं और टियर 3 कॉलेज किसे कहते हैं ना, तो देयर आर मल्टीपल टियर्स। तो चलो हम एक नॉच नीचे जाते हैं, हम टियर 4 की बात करते हैं। टियर 4, टियर 1, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, टियर 1 कॉलेज के अंदर जो होता है ना, कोडिंग का कल्चर होता है। ठीक है, वहां पे सब लोग ना कोडिंग को परस्यू करना चाहते हैं। ये लोग सारे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें अपना पता होता है कि भाई हमें काम करना है, हमें चीजें सीखनी है, हमें आगे जाके लाइफ में पैसा कमाना है। हमारा मेन इज नॉट 3 और 4 लाख की जॉब, हमारा मेन इज एटलीस्ट 25 लाख से तो ऊपर की नौकरी लगे, तब जाके उसमें बेनिफिट होगा, वरना क्या फायदा। तो मेन इज दिस। ठीक है, और टियर 1 के अंदर कॉलेजेस में मतलब आई वोंट से कि ये चीज गलत है कहना, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज आर मोर। कंपनी के अंदर जितनी भी कंपनीज होती है मेजर, टियर 1 के अंदर आके सारी कंपनीज हायर करती हैं। इन कॉलेजेस के अंदर कंपनीज उतना ज्यादा हायरिंग नहीं करती हैं, तुम्हें ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उतना ज्यादा कोडिंग को परस्यू नहीं करते हैं। एंड दे फील लाइक कि ठीक है भाई, हो रहा है, नहीं हो रहा तो बाहर में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जाके एसएससी की तैयारी कर लेंगे, हम जाके एमटेक कर लेंगे कहीं अच्छी जगह से, या हम कुछ और कर लेंगे, इस तरीके की जॉब वगैरह है ना, बैंक में लग जाते हैं फिर ऐसा कुछ। बट अगेन, अगर तुम टियर 4 से भी हो एंड तुम्हारे पास स्किल सेट अच्छा है, ठीक है, इफ योर स्किल सेट इज गुड, तो नो डाउट कि तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी जगह लग सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी, बट हाँ, इवन एज अ टियर 4 कॉलेज स्टूडेंट,
तुम एटलीस्ट आई वुड से 15 LPA का पैकेज तक तो क्रैक आसानी से कर सकते हो अगर तुम्हारे पास स्किल सेट अच्छे हैं। अब ऐसे कौन से स्किल सेट हैं जिससे हमारा इसमें बेनिफिट होगा वो हम अभी आगे जाते हुए देखेंगे। सर प्रोजेक्ट्स तो बना ले, पर प्रोजेक्ट्स तो कभी कभी HR एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते हैं और मना कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर पहले एक बार, बाकी फिर मैं डाउट्स तुम्हारे उसके बाद देखते। देखो टेक्निकल राउंड के अंदर तुम्हारे कोडिंग स्किल्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो लेट्स सी व्हाट DSA एक्चुअली इज ऑल अबाउट। देखो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ना, सिर्फ एक चीज जो मैं टिपिकली हर बार बताता हूँ, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। एंड इंटरव्यू के अंदर डेटा स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, क्या चीज चेक की जाती है? इंटरव्यूअर जो आपकी चेक करता है ना, एक चीज चेक करता है व्हिच इज योर कॉमन सेंस। ठीक है, they are going to check your common sense and इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है that whether you get selected in the company or whether you are rejected in the company. This is the entire thing जो हमारी होती है। तो अब ये कॉमन सेंस वाली जो मैंने चीज बोली, what exactly is this? देखो अब सपोज करो अगर मैं तुम्हें कोई एक पजल देता हूँ लेट्स से, और उस पजल का कोई रिलेशन नहीं होता टिपिकली कोडिंग के जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स हैं, इन चीजों से कोई रिलेशन नहीं होता। तो लेट्स सी इसका आंसर कौन सही बताता है, और मैं आपको कुछ एक एग्जांपल पहले पजल बताता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होगा। सपोज करो एक टेनिस मैच है, ठीक है, देयर इज अ टेनिस मैच, और इस टेनिस मैच के अंदर ना देयर आर मल्टीपल राउंड्स दैट आर टेकिंग प्लेस। तो हम मान लेते हैं इस टेनिस मैच के अंदर लेट्स से 499 मैचेस हुए। ठीक है, 499 मैचेस हो सकते हैं टोटल। सपोज कर लो अब हमारे पास टोटल 499 मैचेस होने हैं, तो हमारे पास हर मैच का एक विनर होगा। इट इज पॉसिबल कि हमारे पास हर मैच का मतलब एक विनर होगा। तो इफ देयर आर टू पीपल, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, तो सपोज करो अगर हमें गिवन है हर राउंड का रिजल्ट क्या है, तो सपोज करो देयर आर टोटल ऑफ 499 मैचेस जो हमारे टेक प्लेस कर सकते हैं। एट मैक्स 499 मैचेस हो सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि पहला मैच ए ने जीता, दूसरा मैच लेट्स से बी ने जीता, फिर ए जीत गया 2 राउंड, फिर नेक्स्ट 2 राउंड्स बी जीत गया, एंड सो ऑन, हमारे कुछ कुछ मैचेस कंडक्ट हुए। और अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई अच्छा चलो अब ये बताओ कि हमारा इस टेनिस मैच का विनर कौन रहा, हु इज द विनर ऑफ दिस टेनिस मैच राउंड या इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का, तो तुम क्या आंसर बताओगे? बताओ व्हाट वुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास टेनिस मैचेस हुए, एट मैक्स 499 मैचेस तक हो सकते हैं। अब तुम्हें नीचे ना मैचेस के विनर गिवन है कि ये मैच ए ने जीता, फिर बी ने, एंड सो ऑन। तुम्हें ये बताना है कि हु इज द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो तुम कैसे बताओगे व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? अब इसके अंदर कोई तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें तो चाहिए नहीं, गूगल में जाना है ना, गूगल में क्रैक करनी है। चलो किसी ने बोला था मेरे को गूगल क्रैक करनी है, सारी चीजें करनी है। चलो इसका पजल का आंसर बताओ पहले कि कौन इस पजल में जीतेगा, कैसे बताओगे? हु इज द विनर कैसे बताओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर? टेल मी क्या होगा इसका आंसर? आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि क्या होगा इसका आंसर, तो बताओ हु इज द विनर कैसे डिसाइड होगा? तो चलो लेट्स वेट, देखते हैं कौन सही आंसर देता है इसका, और फिर आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। रीड क्वेश्चन वंस। कुछ नहीं, बस टेनिस में एक टेनिस का गेम हो रहा है, लास्ट जो सर्व करेगा, तो अंकुश भारद्वाज ने बिल्कुल एकदम सही आंसर बता दिया, पहले ही राउंड में सिक्सर मार दिया। चलो तो अंकुश इज करेक्ट, ठीक है, तो शाउट आउट टू अंकुश। चलो अंकुश इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सपोज करो मैं ये बोल रहा था 499 मैचेस तक हो सकते हैं, हमें बताना है। तो जैसे दीपांशु उपाध्याय ने जो आंसर दिया, अब मैंने 2 जनों का इंटरव्यू लिया, एक दीपांशु एक अंकुश, तो आई सिलेक्ट अंकुश। व्हाई? तो देखो आंसर कैसे होगा। मैंने बोला 499 तक टोटल मैचेस हो सकते हैं, हमें ये लिस्ट ऑफ विनर गिवन है। पहला राउंड ए ने जीता, दूसरा राउंड बी ने जीता, फिर 2 राउंड ए जीत गया, फिर 2 राउंड बी जीत गया। हमें बताना है कि इस टेनिस के टूर्नामेंट का विनर कौन है। तो देखो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं प्रॉब्लम को, हमारे पास सपोज करो देयर आर 5 मैचेस, ठीक है, 5 मैचेस हुए मेरे पास। सपोज करो पहला राउंड
ए जीता, फिर दूसरा भी ए जीत गया, फिर तीसरा भी ए जीत गया, क्या ये बाकी के 2 मैचेस टेक प्लेस करेंगे? अगर 5 टोटल मैचेस होने थे, 5 में से शुरू के 3 मैचेस ही ए ने जीत लिए, तो क्या आगे के मैचेस टेक प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, व्हाट डू यू थिंक, होगा या नहीं होगा? लेट्स सी कौन बताता है इसका आंसर। ऑफ कोर्स आई वुड से कि तुम्हें पता ही होगा कि भाई नहीं, आगे के मैचेस कराने की कोई सेंस तो बन नहीं रही है। 5 मैचेस थे, 5 में से 3 ए ने जीत लिए, और मैचेस खिला के मैं करूं तो करूं क्या? खिलाने की जरूरत ही नहीं है, और मैच छोड़ो, और मैचेस कंडक्ट नहीं होंगे। तो हमें पता चल गया इसमें ए इज द विनर। ठीक, अगर मैं ऐसे ही और मैचेस रखूं तो मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना जरूरी होता है। तो अगर सपोज करो पहला मैच ए ने जीता, दूसरा बी ने जीता, अगले 2 मैचेस ए फिर से जीत गया, तो ये लास्ट वाला राउंड खेला जाएगा, ये वाला भी राउंड नहीं खेला जाएगा। क्यों? मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस ए जीत चुका है, तो आगे के मैचेस नहीं खेले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये समझ आ रहा है कि लास्ट मैच जो भी जीतता है ही इज गोइंग टू बी द विनर। हमें सब मैचेस की फ्रीक्वेंसी काउंट करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू चेक हु इज द विनर ऑफ द लास्ट राउंड एंड दैट्स इट। मुझे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसके थ्रू मैं पता लगा लूंगा। तो ये चीज हमारी आई, कॉमन सेंस में ही आई ना। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जब हमारे प्लेसमेंट की टर्म्स आती हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर आपका दिमाग लगता है। अब दिमाग लगेगा तो उस दिमाग को लगाने के लिए तुम्हें उस सॉल्यूशन को करना क्या है, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर करना क्या है वो सोचना पड़ेगा। उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए डीएसए के थ्रू तुम कोई लैंग्वेज यूज करोगे। You will use either C++ or you will either use Java. These are the 2 languages which are the most recommended 1 languages जिनको तुम यूज करोगे। ठीक है, इन लैंग्वेजेस को यूज करके तुम जा सकते हो और तुम बेसिकली इस चीज को सॉल्व करके बता सकते हो। एंड इफ यू गिव द करेक्ट आंसर दैट इंक्रीजेस योर चांसेस फॉर सिलेक्शन। देखो, सबसे पहली चीज ये समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो राउंड होता है उसके अंदर टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जब तक ये क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं जा सकते। ठीक, तो चलो अब सबसे पहले टेक्निकल राउंड के अंदर जो डीएसए आया उसके अंदर ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे जरूरी होते हैं जो तुम्हें करने हैं। तो देखो, एरे, आई वुड राइट स्ट्रिंग्स, आई वुड राइट लिंक लिस्ट। ठीक है, मैं सारे टॉपिक्स लिख रहा हूँ। लिंक लिस्ट होगा, फिर तुम्हारे पास स्टैक होगा, फिर तुम्हारे पास क्यू होगा, then you will have binary trees, then you will have binary search trees, then तुम्हारे पास होगा heap, then होगा hash map. So I'm writing down all the things that you need to know. ठीक है, hash maps होगा, then you'll have graphs, then you'll have tries. ये हर डेटा स्ट्रक्चर की तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। ये नहीं करना कि इसके STL सीख लिए और तुम्हारा सीन सॉर्टेड है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। That's not going to help you. तो ये जब तुम चीजें सीख लेते हो, प्लस इसके अलावा 2 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें, डायनामिक प्रोग्रामिंग जिसको हम डीपी बोलते हैं, एंड रिकर्जन, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में काउंट होता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती हैं तब तुम बोलोगे कि मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से करना जानता हूं। दैट्स इट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्चुअली गो एंड सॉल्व कोडिंग क्वेश्चंस व्हिच आर टिपिकली आस्क्ड इन इंटरव्यूज। ठीक है, तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो यू स्टिल हैव टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट हाँ, अगर तुम सेकंड ईयर में हो और तुम थर्ड ईयर में हो, तुम्हारे इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, तो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं चीजों को। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा तुम्हारे। सौरभ, आई कैन सी दैट यू हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन, तो डोंट वरी, आई विल लेट यू नो अबाउट इट। देखो, सबसे पहली जो चीज समझ आई, हमारे पास ना एक फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन जो हमारी बिल्ड हमें करनी होती है, तो फाउंडेशन इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जब तक डीएसए नहीं आता, कोई अच्छी कंपनी के अंदर तुम जा नहीं पाओगे उसके टेक्निकल राउंड को क्लियर करे बिना। तो पहले टेक्निकल राउंड को अपने सेव करना है, तो डीएसए तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ और करो ना करो, डीएसए तो सीखना पड़ेगा। इसके बिना बात नहीं होगी। डीएसए में कौन से टॉपिक्स जो मैंने लिखे थे, तो डेटा स्ट्रक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन जब तुम्हारी हो जाती है, देखो तुमने सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को शुरू किया।
अब सिंस यू गाइस आर इन लेट्स से सेकंड ईयर और तुम्हारी इंटर्नशिप आ रही है, और यू गाइस आर इन थर्ड ईयर एंड तुम्हारी इंटर्नशिप आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को सीखने के बाद तुम्हें बेसिकली जाना है, और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती तो देयर आर पोर्टल लाइक LeetCode, है ना, तो LeetCode पे जाओ और LeetCode से जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कर सकते हो, ओनली मीडियम एंड हार्ड ही ट्राई करना है। इजी क्वेश्चंस कर करके तुम्हें खुशी तो बहुत मिलती है बट उसका ना कोई फायदा नहीं होता, तो मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस पकड़ो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, एंड वो क्वेश्चंस तुम तब तक करोगे जब तक तुम्हारी जॉब या इंटर्नशिप नहीं लग जाती। इस चीज को तुम बंद नहीं कर सकते हो, बंद करते ही काम खत्म हो जाएगा। जॉब इंटर्नशिप लगने तक तुम ये चीज करोगे, चाहे तुम फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, चाहे तुम थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, या तुम फर्स्ट ईयर के भी हो, फोर्थ ईयर के भी हो, ये तो तुम्हें पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाने के लिए ये चीजें तो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ रही होगी क्या डेटा स्ट्रक्चर्स जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर्स करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगली चीज आती है, जब तुम अपने इंटरव्यूज के लिए या उसके लिए अप्लाई करते हो तो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रेज्यूमे। तो रेज्यूमे के अंदर ना सबसे मुश्किल चीज जो होती है, अगर तुम्हें मैं बोलूं तुम्हें रेज्यूमे बनाना है, तुम लोग जाओगे सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिख दोगे, है ना, तुमने बीटेक में कितने मतलब स्कोर किया, 12th में कितना किया, 11th में कितना किया, एजुकेशन को तुम मार्क कर देते हो अपने। फिर तुम लेट से यहाँ पे अपने स्किल्स लिख दोगे कि कौन कौन से स्किल्स तुम्हें आते हैं। अब इन स्किल्स को तुम्हें जस्टिफाई भी तो करना है कि तुम्हें कैसे आते हैं। तुमने बोला तुम्हें आता है, मान लो हाउ डू यू से कि तुम्हें ये चीजें आती हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इसको जस्टिफाई कर सको। अब स्किल्स को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है, तो तुम जाओ इसमें LeetCode के ऊपर अगर तुमने क्वेश्चंस कर रखे हैं अच्छे खासे, उसको मेंशन करो। LeetCode के ऊपर तुम्हारे कॉन्टेस्ट्स होते हैं, तो उन कॉन्टेस्ट्स को एक्चुअली में तुम दो, तो हर संडे को सुबह 7 बजे 8 बजे कॉन्टेस्ट होता है, उन कॉन्टेस्ट को दो, उसमें तुम्हारी कुछ रैंक आएगी, है ना, उस रैंक को अपने रेज्यूमे में तुम लिख सकते हो, है ना। तो तुम्हारे जो इसमें LeetCode की प्रोफाइल है, LeetCode की प्रोफाइल डालोगे, उन चीजों को तुम यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, जिससे पता चलेगा अच्छा ये बंदा वो है जो एक्चुअली में कोड करता था, ये बंदा वो है जिसने एक्चुअली में जो यहाँ पे स्किल्स लिखे हैं, उसे डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, उसे C++ आता है, उसकी LeetCode की प्रोफाइल देख के मैं चेक कर सकता हूँ तो कितने टाइम से कर रहा है वो भी दिखता है। जब तुम्हारा ये हो जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे मेन जो चीज मिसिंग हो जाती है, दैट इज प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से आएंगे, कोई हवा में थोड़ी बन जाएंगे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तुम्हें टिपिकली डेवलपमेंट चाहिए होती है, ठीक है, यू नीड टू नो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं रादर देन तुम कोई रैंडम बना के बैठ गए, जिसका ना सर है ना पैर है, बस बना के रख दिए, यूट्यूब से टेपा बना दिया, कोई हमने कहीं किसी सीनियर से उठाया बना दिया, किसी दोस्त से लेके टेप दिया। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है जब तुम प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। तो डेवलपमेंट के अंदर देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक तरीके की डेवलपमेंट आप समझ लो वेब, जो आप वेबसाइट वगैरह देखते हो। दूसरी डेवलपमेंट हमारे पास होती है एंड्रॉइड, ठीक है, हमारे पास ये दो डेवलपमेंट होती है। आई रिकमेंड वेब डेवलपमेंट मोर। वेब डेवलपमेंट के अंदर ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। तो डोंट वरी, जो तो मतलब डाउट्स पूछ रहे हैं लोग, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स। एक बार हम ये देख लें कि क्या क्या जरूरी है चीजें, राइट। जब तक पता ही नहीं होगा जरूरी चीजें क्या है फिर कैसे होगा, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं। तो ये हमारे को प्रोजेक्ट्स वगैरह वाली चीजें लिखनी होती है। अब यहाँ पे तुम में से कोई है लेट्स से जिसने कोई इंटर्नशिप करी, वो इंटर्नशिप के बारे में लिख देगा, है ना, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लिख देते हैं लोग। तो ये चीजें जैसे जैसे तुम ऐड करते हो ना वैसे वैसे तुम्हें बेनिफिट देता है। तो अब जैसे डीएसए सीखा, जब फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया कि भाई हमारा डीएसए इज डन, अब LeetCode तो जब तक जॉब नहीं लगती तब तक करना है। अब LeetCode के साथ साथ पैरेलली तुम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हो अपना डेवलपमेंट का। तो C++ में अगर तुम सीखते हो, अगर डेटा स्ट्रक्चर्स तुमने C++ में सीखा तो तुम जा सकते हो वेब डेवलपमेंट की तरफ आसानी से। अगर तुम एंड्रॉइड में एंड्रॉइड कह रहा हूं, अगर तुम जो जॉब बेसिकली या फिर जो लैंग्वेज तुमने सीखी वो जावा है, तो जावा के थ्रू ना एंड्रॉइड में जाना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, और जावा के थ्रू भी तुम वेब में जा सकते हो।
सी प्लस प्लस के बाद अगर किसी का मन होता है कि यार मेरे को कॉम्पिटिटिव में जाना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तो हाँ, पीपल डू सी प्लस प्लस एंड दे मूव टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज वेल। तो ये हमारी टिपिकल प्रोफाइल रहती है जिसके इर्द गिर्द तुम्हारी पूरी बीटेक की जर्नी जाएगी। जब तक इनमें तुम मास्टरी नहीं करते हो देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब डेवलपमेंट में जाना है या एक्सपर्ट कॉम्पिटिटिव में बनना है, दिस इज योर चॉइस एंड दिस डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि तुम्हें किस में मजा आता है। जब तक तुम्हारा मजा तुम्हें नहीं आ रहा, जो भी तुम चीजें कर रहे हो, बैठे और सो गए, पता ही नहीं, मतलब ना पढ़ाई शुरू करी थी और बैठ के सो गए, तो उससे कोई हेल्प होगी नहीं ज्यादा। तो दैट्स व्हाई वो चीज करो जिसमें मन ज्यादा लगता है, उससे ज्यादा बेनिफिट नो डाउट तुम्हें होगा। अब तुमने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी शुरू करी, ठीक है, अब डेवलपमेंट करी या फिर तुमने कॉम्पिटिटिव करी, यहाँ पे तुम डेवलपमेंट करोगे और यू विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव। एक ही चीज तो करोगे पहले, तो एक ही चीज करनी है सबसे पहले, दोनों चीजें पैरेलली स्टार्ट नहीं कर देनी है, दैट्स नॉट हाउ थिंग वर्क्स। तो अब ये जब कर लेते हो, फिर अगेन इसके अंदर जब तुम ये चीजें कर लेते हो, यहाँ पर ना एक पॉइंट आता है जहां पे तुम अपना सीवी बिल्डिंग या रिज्यूमे बिल्डिंग कर सकते हो। तो आई राइट सीवी, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, सीवी और रिज्यूमे बिल्डिंग। तो इसको तुम बिल्ड कर सकते हो। अब इसको बिल्ड करने के लिए कैसे हो सकता है, देखो कोई बोलता है मैंने कॉम्पिटिटिव करी तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, मैं क्या क्या चीजें कर पाऊंगा, तो लेट्स सी दैट एज वेल। देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के बाद तुम क्या करना चाहोगे, अगर तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ी एंड यू वांट टू बिकम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर वर्सेस तुमने वेब डेवलपमेंट करी एंड यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर ली, जो तुम्हारा मन करता है वैसे तुम उस हिसाब से गए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को करने के बाद you will actually go towards the portals such as code forces। code forces पे जाओगे and you will try to become expert बनोगे, candidate master बनोगे, है ना, इसको तुम बेसिकली बनाओगे। तो आई एम राइटिंग इट एज ऐसे छोटा लिखना होगा। तो ये चीज तुम करोगे, अपनी प्रोफाइल बनानी है ना मेन, तो रेज्यूमे के अंदर ये चीज मैटर करती है जब तुम प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो। अब जब तुम कोड फोर्सेस वगैरह पे पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारे जो एडवांस क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के स्किल्स बढ़ते हैं, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करती है। अब जब तुम ये कर चुके हो, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है इसके अंदर, तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के अगर तुमने नाम सुने हो तो आई एम प्रीटी श्योर सबने सुना होगा, बताना भी कौन कौन से होते हैं। एसीएम आईसीपीसी होता है, देन यू हैव फेसबुक का हैकर कप होता है ना, गूगल का भी होता है, कोड जैम होता है, हैश कोड होता है, किक स्टार्ट होता है। देयर आर मेनी ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस। मेन मोटिव इज इनको जीतना नहीं होता, विनिंग इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अगर कोई सोचे मैं नहीं जीत पाऊंगा इन कॉम्पिटिशंस को, तो नहीं, जीतना नहीं है। इन कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करके जो भी तुम्हारी रैंक आती है उस रैंक को तुम अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। तुम्हारी रेज्यूमे बिल्डिंग होती है। अब जो तुम्हारी रेज्यूमे बिल्डिंग हो रही है, ठीक है, उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, देखो चलो, जो तुम्हारी रेज्यूमे बिल्डिंग हो रही है उसके थ्रू व्हाट यू कैन डू मेन इज, या तो तुम अपने रेज्यूमे के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बिल्ड करके ये सारी चीजें डाल दो, ठीक है, ऐड दीज थिंग्स, यू वुड बी वेरी गुड। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई ऐसा मतलब मुश्किल परेशानी तुम्हें नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। तुम्हारा रिज्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, अगर तुम टियर 3 से हो, तुम्हें लगेगा यार मेरा रिज्यूमे नहीं शॉर्टलिस्ट होता, अप्लाई करता हूं कुछ होता ही नहीं, रिज्यूमे में कुछ लिखो तो सही जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो, क्योंकि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लेने के लिए रिज्यूमे के अंदर सामान चाहिए जिसके बेसिस पर तुम्हें कोई खरीदना चाहे। यू आर एक्चुअली डूइंग दैट, है ना, वो चीज तुम्हें चाहिए होती है, उसके बिना काम नहीं बनता। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरी होती है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। अब टू डू दिस वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट, वेब डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा चीजें रिकमेंड की जाती है, दिस इज मर्ज ट्रैक। अब मर्ज ट्रैक में M इज फॉर MongoDB, है ना, E इज फॉर Express.js, R इज फॉर React.js, मतलब टर्म्स पता होनी चाहिए क्या क्या करना है। N इज फॉर Node.js,
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ये सारे ईयर्स का मैप बन जाएगा आसानी से जब हम एक बारी इन चीजों को देख लेंगे। तो ये सारी चीजों को तुम बेसिकली करना शुरू करते हो और इसके अंदर तुम अपनी एक्सपर्ट जो भी एक्सपर्टीज है वो इसके अंदर करते हो। अब जब तुम वेब डेवलपमेंट सीखते हो, वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद तुम एक्चुअली अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, है ना। एडवांटेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो खुद के, सच एज तुमने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया, तुमने Amazon प्राइम का क्लोन बना दिया, right? So you can actually make each and every project of yours, and you can make clone of each and everything. Netflix clone, Facebook clone, Instagram clone. Okay, so you are from USA. Okay, let's go for English now. So you can make projects such as these. So if you write projects in your resume such as these, so this will show that okay, you have done something, you were not sitting idle. So that's how this thing works. And apart from this, when you are confident and you say, okay, I am someone who can make projects on my own. So the next thing you can go for is freelancing. So in freelancing, what you can do, so there are certain people, those who want that, okay, I want my product to be deployed and I have this use case. So you can make or build a website for them and they can also pay you. So I know that you can easily get up to 20 to 50K per project by doing freelancing. Per project, you can take this much of amount. So now, in order to go for this thing as well, you need to know web development again. Without knowing this thing, nothing's going to happen, right? कैसे होगा कुछ जब तक ये नहीं आता? So you need to know about this thing. And once you are done with this freelancing part, there are other opportunities as well. So you can participate in competitions such as GSOC. You can participate in competitions, or you can go for open source as well. So there are certain organizations. Let's say I would write few of them here. So Mozilla Firefox. So Firefox is the product of Mozilla organization. There is VLC Media Player, right? There is Linux. So you can go for many other organizations like these, and you can start contributing towards their code, right? When you do this, so this is going to help you a lot. So Vivek Goyal says, is Snake Game a good JS project? I won't say that it is not a good project. Of course, it is a good project, but these projects are better. When you make Netflix clone, Facebook clone, or Instagram clone, you know how to set up the chatting application in it. You know how to work with the databases over there. Because in Snake game, that thing is not going to come into the picture. So again, you should not go for something which is limited only to the JavaScript, but which is the entire MERN stack, that uses this entire MERN stack. That is going to help you out a lot. So this is really going to help you out when you are actually good in web development. Again, when you do these things, there are again, you can go for Smart India hackathons as well. There are many hackathons that are organized in various colleges as well. So you can go and you can participate in hackathons as well. Right? Go participate in college hackathon, Smart India hackathon, participate in open source, make your projects. You can go for freelancing and you can earn money in this as well. You can again write all these things in your resume. This is going to help you out. Again, this is a very good profile. If you are not that much, if you don't love that thing where you have to use too much of, or you have to solve many higher rating problems on code sources. If you don't enjoy that, so again, you can skip this particular part and you can go for this development part. If you are comfortable in both of these, let's say if there is someone who's a first year student, so a first year student has a lot of time. They can typically go for this as well, and they can go for the web development as well. Now, coming on towards the main people, those who are here because their internship and placement season is near. So what they can do? So in case of internships and placement season, so let's say if you are a second year student,
and your internship is about to come. So what all things you need to focus on? You just need to focus on data structures and algorithms for now. Master this. Within the next 2 months, you need to learn all these things. And once you do this, then you can go towards practicing from LeetCode. And once you are done with this LeetCode part, that's it. You can go and you can sit for the internships. This should be the path, or this should be the roadmap for internship. See, you don't have that much amount of time. Now, when you don't have enough time and your placement or internship season is near, since you are a second year student, you need to go for internships. So go with this particular path and you'll be fine. You won't be having any issues. Okay, sir, consider my question, please. I need a time divided roadmap. Okay, I'll make the time divided roadmap as well. So, for a second year student, let me divide this into the timeline. Okay, so I am assuming that your second year is about to end in the next 3 to 4 months. You have only 3 to 4 months remaining. Then you have your third year. Then you have your fourth year. So, first year student don't have to worry about anything. They can just go, they can start doing stuff, and they would be very good till the time they reaches their placement time. So they don't have to worry about it. So for a second year student, so let's say if you are a second year student, your fourth semester is up, right? And in your fourth semester, you don't have that much amount of time. So I'm assuming only 3-4 months are there. So in these 3-4 months, you need to master data structures and algorithms first. You need to master this data structures and algorithms first, otherwise you won't be able to do anything which is going to help you crack the internships. Once this data structures and algorithm part is over, so typically the students, those who come to me at coding blocks, I teach them data structures and algorithms. Of course, that course is quite exhaustive, and I have seen students, those who were able to crack very good organizations just by doing one course of this data structures and algorithms, because we typically make sure that we cover each variety of questions that you may face in your placements and internship season. And there has been instances where whatever I have taught in the class, that particular thing has come as it is in their interview and placement rounds. So there has been instances like that as well. So you should know that, okay, this thing is of course possible, and this is something which happens. All right. So, okay. So now moving on towards the next part. See, once you have done this data structures and algorithm part, the next thing which comes into the picture is start doing LeetCode. Okay. So now your journey to the LeetCode will start. Till the time you are not placed, I would say, till the time you are not placed, your journey to LeetCode will start. So we are actually working on bringing some very good problems on Hacker Blocks as well. So Hacker Blocks is a coding portal where students, those who typically come to coding blocks, actually practice, and there are lots of questions. So if you Google Hacker Blocks, so you will find these things. Okay. So you'll have to do till the time you are not placed. So till the time placement is not there, you need to do this thing. So I'm giving you a very in detail map. So I would say this is the perfect roadmap which you can follow in order to master each and everything, so that you are able to crack any organization, be it Google, be it Amazon, be it Microsoft, be it a startup. So of course, I'm not saying that service-based companies are your aim. So you can skip that part. But apart from that, product-based companies, mid-level product-based companies, startups, you can go for that. Now, there are many students, those who say, "Bhai, what if I have done DSA and I want internship? I'm not able to get any internship." So if your data structures and algorithms concepts are too good, so I won't say that you are next level, you are Superman in data structures and algorithms. That's not possible, because knowledge is not going to stop. So once you go and once you start practicing, questions are never going to end. But that's the problem. So you need to identify which all type or which all categories of questions you need to do. Once you know that I am comfortable with these categories of question, I can do these questions. That's it.
That's the end of story. You don't have to worry about anything else. Now, this is what the ideal roadmap in terms of data structures and algorithm is. So once your this 3 and 4 months are over, let's say your next year gets started, which is your third year, because you are a second year student and your third year will get started. So in your third year, what you can do? So in third year, you should start doing the web development part. Okay. So learn web development along with applying for internships. See, your knowledge and your skill upgradation should not stop. You should not say, okay, I know data structures, now I won't continue. That's it. Because that's the most dangerous part. You should not stop once you are done with the basic foundational concepts. So once you learn web development, and this is the MERN stack development, or if you are interested in Android, you can go for Android development. So go for these things first. I won't say go for competitive programming, because competitive programming is something which not everyone can do. So you need to identify whether you have interest or not. So Vivek Goyal, I'll come to the third year as well after I explain what all things you can do as a second year student. Then I'll come for the third year. Then I'll come for the fourth year student as well. No, you are not too late for the fourth year student. Whosoever asks, just let me just come to your particular year as well. So go for these things. There are some people those who want to go for machine learning and artificial intelligence as well, right? But that's something which is altogether a different field. There are not lots of opportunities in machine learning and AI department. So you need to focus on one thing. If you are oriented towards the research field and you want to go and apply to, let's say, masters in AI, you want some research papers with you so that your college process becomes easier when you apply, and your chances to get selected becomes easier. So you can go for that as well. There are lots of students those who go for this field, but do ensure that your mathematics is something which excites you, because there would be certain formulas that you might not like in it. It doesn't require that amount of mathematics, but yeah, you'll have to deal with the mathematics as well. So you need to do this. So of course, typically it is going to take you 4 months again to master this thing. So you will take 4 months to learn the theory part only, not anything else. Once you do this particular part, then you should immediately start towards the things that I have written over here. So I'll call this projects, freelancing, GSOC, open source, Smart India Hackathon. If you see that, okay, there is a Smart India Hackathon application going on, go and apply. If you see there is a hackathon related to web, go and participate in it. It doesn't matter if you fail. What will happen? You would not get shortlisted for any round, and they would probably say that, okay, you don't know web development. That's it. Nothing else is going to happen. You would get the exposure of what all different things can be done with the help of web development. You will connect with the people, those who have the same interest as you. It is very, very good exposure when you go over there. So I'll write these things over here, right? You can start doing those things over here. So activities that I have written previously, right? The activities that I have shown you over here. So you should start doing these activities. This is what is going to help you out with this. So start doing those activities and you can get a very good placement, because see, those activities are time consuming, and when you go for open source, when you go for GSOC, you'll have to devote time. Now, of course, when your third year will end, right? This is your third year and this is your fourth year. So let me correct myself a little bit. See, I have drawn these things quite further. So let me bring them down. So see, these activities are something which you'll have to do. And when your third year ends, then the placements will come. So I think you might be wondering that, okay, we have enough amount of time, we can do anything that we want, but no, you have just this 1 year and this 3 months, or probably whatever time you may have, I think 2 months or whatsoever. So this is the time. Do this and you would be very good at it. You won't have to worry about placement or internships. Even if you are a tier 3 student, you are good to go.
You can go, you can start applying. Even if you are a tier 4 student, you can still apply for these. Now, once you sit for the placement, at this particular time, you need not stop the things that you have done. So you need to still practice this LeetCode wala part. You need to keep on practicing. You need to again make projects till you get better job opportunities, right? So till the time you are not satisfied with the job that you have got, you need to start working. You need to still keep applying, and you need to get a better job. This is the roadmap what you can follow, and this is not going to be a very complex thing for you guys to do. If you are very serious, if you know that okay, I have to build my career, you can go for these things, and this is going to help you out without any second thought. Just don't think about it, just start doing these things, and this is going to help you out for sure. I am giving you my words that this will help you out if you'll do it. Now, okay, so this is something which a second year student can do. Of course, if you feel like, okay, you said that I want to do competitive programming, you can go for competitive programming as well. So you can replace these activities with competitive programming as well. Right? With competitive programming, you can replace web development, and these activities would be this. Make good profile on code forces, start participating in international contests, bring some good ranks, and you can write them down in your resume. This is going to help you out. Sir, IT तो ले लिया, but coding समझ नहीं आ रही and interest नहीं आ रहा. What to do? Okay. See, what he's saying, interest नहीं आ रहा. Let me give you one very very good example of mine. So in 12th board, or I would say in 12th pre-board, you know that so my name is Kartik Mathur. I don't know whether you know me or not, but my name is Kartik Mathur. I am academics head at Coding Blocks currently, and I teach data structures. So I teach this. I teach data structures and algorithms. I teach competitive programming. I teach web development. I teach these things, and this is the part where I do these things in C++. So in my 12th pre-board, I got, you know how many marks in C++? I got 0 number. I was not even able to write the solution of one question. I didn't know that what programming actually is, what all things are necessary in order to learn C++ programming. I didn't have any idea. So this is something which I got in C++ subject in my class 12 pre-board. So till 12th class pre-board, I had no idea. So what happens? See, the way you learn things, right? The way you learn things. This is really important, right? I would say this is most important. So I got to learn from a teacher, and he was quite good. So when I learned from him, so he was quite good. I understood the concepts, and that is where my interest in coding started. This is the point when I started to code. This is the point where my interest in C++ language started, and I got to know, okay, this is something which excites me, and this is something I want to do. Right? So this is really important. Okay. Now, when you learn things, you need a mentor. So who can teach you if you are not a very good student? See, what happens when you are even when you are in school, you go to school, you still need tuition classes. You are actually built and brought up in that way only. You need hand holding. You need someone who can teach you, who can sit with you, who can guide you. That's the really I would say तुम्हारी ज़मीर में बसी हुई है वो चीज, राइट? तो मुझे ज़मीर का पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट हाँ, तुम्हारा ज़मीर रग रग में बसी है, राइट? That thing runs in your veins. So you need a mentor, those who can teach you. The same thing happened with JEE mains as well. You were going to the coaching, you were going to the tuition, you were actually trying to learn each and everything which is there that would help you to crack IIT and top NITs, NSIT, DTU and whatnot. That was the case, right? This is what happened. So now, when this thing is there, you need a mentor and you need a friend circle, those who actually
code with you. So to stay motivated, you need this friend circle. If you run alone and if you don't have interest in coding, you don't know where to learn things from, you don't know who can guide you, this is when you start losing interest. So this is the part which you need to work upon. If you are not getting this part in your life, so start doing this. So friend circle doesn't mean that you'll have 10 to 20 friends. Just have 2 to 3 friends, those who actually code along with you. This is going to help you and this is going to make you interested in coding. And when you start learning initially, so just don't sit for 10 hours straight away. So try to give 2 to 3 hours daily and slowly increase this time but slowly. Don't do this instantaneously, मतलब रातों रात बैठ के पूरा करने की कोशिश, बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है. So increase time gradually. So your time should increase gradually. Start with 2 to 3 hours, then again increase it to, so then you can go, let's say, I would say at max you can sit for, let's say, 7 to 9 hours. This depends on person to person, but you need to start with 2 to 3 hours daily. Don't sit for very longer duration initially. You will lose interest. This is for sure. So this is what you need to take care of initially when you start to learn coding. Of course, there are people like me, those who can actually guide you. So in case you are interested, you can come, you can talk to me as well. Okay. So this is what exactly you need to do. Now coming on to the third year. So first year students are good. You guys are lucky enough to know this thing at an early stage, and you can do each and everything that I am telling you. You don't have to make a roadmap. Just start doing DSA, then maybe web development, then maybe competitive programming, and the activities associated with them. Your profile is going to boost that much. You'll not even think, okay, you'll not even think that, okay, I have to worry my placement. I have to worry about my placement. Now, one thing that is really important over here that I skipped at that part. So when your placement time is near, so I will say, let's say if you have 1 to 2 months, when your placement time is near, so this time is really crucial. So in this time, you won't be able to practice or learn the theory that much. What you have to do, you have to solve as many questions as possible. Solve questions, right? Do sit with the questions, do try to solve, and try to learn some non-coding subjects. So these are the things which you can be asked in your interview. So for example, operating systems. So I'm writing that as OS. So this is operating systems. Then you have DBMS, database management system. Then you have computer networking. So these are the things which you need to know. If you are equipped with this much skill, you are going to nail your every interview and each and everything that you think about. Okay. Now coming on to the third year roadmap, let's see what all things you can do as a third year student as well. So in third year, so I'll again make the roadmap. See, you don't have that much amount of time. I won't give you false promises. I won't say that you can do each and everything that I have listed down. You need to focus on the important concepts which are going to help you with the placements. So you just have this much time. You have 3 to 4 months. So again, your roadmap will also remain same. You need to devote more time initially. You'll have to probably sit for 5 to 6 hours daily when you actually have this limited amount of time and you need to do each and everything. You'll have to devote more time. So time will increase exponentially. So now over here, you will start with DSA again. Till the time you are not confident with DSA, you won't be able to do it. It should take typically 2 to 3 months in order for you to learn this. And the next 1 month that you have over here, just one thing. Just forget everything. Go for LeetCode. Forget everything. Nothing else you have to do. You just have to practice on LeetCode, and that too medium and hard questions only. You should not go for easy questions because they are not going to help you. No one is going to ask you an easy question. No one will say, okay, just tell me how to find a prime number. Why would anyone ask that? Okay, you won't be getting asked that questions. Now you need to sit for placements.
You don't have that much amount of time, so go for this approach. That's it. This is the best thing which you can do. And in case you need help, there are courses which are present at coding in coding blocks as a classroom course, live course. There are many courses, so you can also take a look in case you are not sure about what you need to do. You'll have to go for it because the time is very limited. Now, once the placements get started, so you should not just give up, right? You will keep on practicing the LeetCode till the time you are not placed, right? Till the time you are not placed, you will keep on practicing LeetCode, right? Or you are looking for better job opportunities. Now you'll have to do this parallelly. So if you are going for better job opportunities off campus, so off campus there are many places where you can go and apply. So there is one portal which is hiring blogs. So this is the hiring portal of coding blogs. You can go here and you can apply for the jobs. So once you go for this and you are practicing from LeetCode, so parallelly you should start learning web development. So you need to make certain projects, you need to learn things, and this is how the things will work. Start doing web development, and that's it. Okay. And sir, what to do if I have no mentor? As I am a course branch student, Saurabh, this is my number. Now you have a mentor, so I'm guiding you. So I am your mentor in a way, I guess. So this is my number. My name is Kartik Mathur. So you can save my number and you can probably ask the doubts that you have. Okay. Now till the time you are not placed, you can go and you can start practicing web development. Learn stack over here, and you can ask for the placement. So in case you need help with these, I can probably provide you referrals. Right? You can ask for referrals from me. I also provide referrals to the students, those who are looking for jobs. But again, if you are looking for a referral, your skill side, your programming side should be good. I'm not saying you should be an expert, but yeah, you should have knowledge which is more than an average student. Okay. So how much time it will take for DSA? So I have written each and everything over here. So this is 3 to 4 months. So it will take 3 months for you to learn. So this is what I'm talking about in a guided manner. Then you learn things in a guided manner and not abruptly. Okay, this is how you can do it. So this is the entire roadmap which you should follow as a third year student, and this should be very good. You don't have to worry about anything else. So don't go for very advanced concepts of DSA like segment trees, like multi-dimensional dynamic programming. You don't need that. No one is going to ask you that. You should leave that. So concept theory language का आता है sir, but logic implementation करना नहीं आ रहा question है. Okay, Nauman. So you say you know the concept. See, so there are two things that must have happened. So if you are saying that I can solve questions or I know concept, if you say your concepts are good, but you are not able to solve questions. So this is the point. If you are struggling at question solve नहीं हो रहे, क्या करूं? इस केस में क्या करें? तो देखो, to do this particular thing, what you can actually do, let's see. देखो, in order to do this thing, you know the concepts, you know how you are not able to solve questions. So in this case, what you can do, see. There are two things which must have happened while learning things. When you were in the learning phase, you didn't code along, right? You tried to learn the theory, but you didn't code along. You didn't implemented every concept which you actually studied. You didn't do the implementation part. You didn't solve the standard questions which were there while learning those concepts. If this is the case, then you'll have to again go start learning things, implement those concepts. That's really important. And another thing is you are lacking practice, right? Lack of practice.
and you are scared of these things. And lack of practice doesn't mean you just don't solve it. You look at the solutions and solve it. Every time, not just sometimes, but every time. So you need to identify if you fall in this category. Then if you are falling in this category again, you need to give in genuine efforts while learning these things. Then only the things will start getting better. ऐसे randomly तो नहीं होगा. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझ पाना. Okay, so you need to identify where do you stand. So if you are lacking practice, this is fine. This can be improved with time. But if you are not, if you have not implemented the concepts, whatever you have learned is just the theoretical part of it. You just did each and everything in the notebook. It is not going to help. You need to do each and everything again. So for a fourth year student, the roadmap is quite simple. Learn DSA, start doing LeetCode, and again start web development as well because it's late. You are already running late out of time. You need to learn DSA and web development, and it will take time. It cannot happen within next 3 to 4 months or within next 6 months. It will take some time in order for you to become expert in it, and then only you would be able to move forward. Is this particular thing clear to everyone? What I have told you? ये समझ आ रही है बात? Are you able to relate to what I am saying? बताओ, is this thing clear to everyone? Okay, so now if you have any doubt, if you have any question, so you can ask. I have told you everything. Just one more thing, how to practice on LeetCode. Okay, how to practice. No one tells this, but I will tell you how to practice. So you have multiple days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Right? Let's say if you start practicing from Monday, I'm giving you an ideal roadmap, what you can do. So on Monday, if you start, let's say you sit for maybe you do a 2 to 3 hour sitting. You can sit for this much time, you do a one sitting of this much duration. Now over here, you actually try to solve questions that you have taken. Let's say you have a 10 question bank that you have with yourself, and you'll try to solve it in this much 2 to 3 hours of time, or you can increase the time to 4 hours as well. This depends on your capacity for how much duration you can sit. Now in a 4 hours duration, try to solve as many questions as possible. So there would be a case, let's say I'll list down the 5 questions. You start solving each and every question one by one. Let's say you read the question and you didn't get it, so skip it. You try to read the second question, you understood it, you solved it. You read the third question, you solved it. Fourth and fifth questions, you were not able to solve. This could be the possible case. Now, you will note down these questions that you were not able to solve over here. So, create a Google Sheets, I would say. Create a Google Sheet. You can, of course, write down the date, question name, and the link. So write down all the questions. So 1, 4, 5. So write down these questions over here. So these 3 questions were there that you were not able to solve. Write them down. Now what will happen? You'll repeat these things daily. So you'll do one sitting. You can do 2 sittings at least in a day. This depends on how much placements and internship season is near you. Even you can go for 3 hours, 3 sittings. 2 to 3 hours sitting, and you are doing this thing for 3 times a day. And of course, you'll note down all the questions that you were not able to solve. You can also make the list of the questions that you were able to solve at that time. And you will feel that, okay, these are some very good questions and I'll try to solve them again. Now what you'll do, you will repeat the same thing on Tuesday, do this thing. Do it on Wednesday, do this thing. Do it on Thursday, do it on Friday, do it on Saturday, and then take 1 day rest, I would say. If you just have 3 months in placements and internship, there is no rest for you guys.
But yeah, if you are a first year student, you can do this for, let's say, one time. You can go for 3 hours sitting once, and you can start doing this just for 3 hours a day. If you are a second year student, then again you can go for 2 sitting maybe. Third year students can go for 3 years, three sittings, and that's how the things can go on. And on Sunday, what you'll do? Now you'll have a list of questions that you are not able to solve every day. Monday, Tuesday, you'll have everything over here. Now solve every question that you were not able to solve or that is present in this list. So what will happen? Whatever you did on Monday, you would try to understand that, okay, I actually saw the solution of it. Now, how would I know that if this question comes again to me, if I'll have to do it for the second time, whether or not I'll be able to solve this? So this is how you can actually go for it. This is how you can strategize these things. Okay. So once you practice the questions that you are not able to solve, the confidence will start building up. You will try to understand the concepts that you are not getting at the first time. And when you try to do this for multiple amount of times, right? When you try to solve the questions for multiple amount of time. Now what will happen? So let's say there are total of 20 questions that you were not able to solve. जो तुमसे solve नहीं हुए 20 questions थे. And when you try to sit and solve each and every question on Sunday, so what will happen? It's possible that you are not able to solve 5 questions again. So write these 5 questions again in the sheet. So you'll have to solve these questions again. That's how the things will work out. Okay, this is something which I feel is going to benefit you guys for sure. So do this. Okay, sir, I am in final year and I have not done an internship and learning DSA. Is it possible to get a job in a product-based company without an internship? Yes, Shubham Yadav, it is possible for sure. Yes, it is possible. Of course, your skill set would matter. If you are good with development and if you are good with programming, you would get selected. No one is going to judge you on internship. They would judge you. Where do you stand currently? Do you know how to write code? Do you know how to convert logic to program? If that's the case, you would be good. Is this thing clear to everyone? I hope that I have done these things for you guys and they would help you for sure. And you would be able to do wonders in the upcoming placements and internship season. And all the best again from my side for the placement and internship season that is going to come. And do let me know if you have any query. I'll write down my number again. So I'll show you my number again. I would say this is my contact number. You can connect with me if this is if this is something which you are looking for. So tell the topics in C++ along with OOPS before DSA. So I would say that you can visit, just search online course coding blocks and over here you need to go for master DSA in C++ or Java. Go for this and you would be able to see the entire syllabus or the curriculum. Okay, the curriculum can be seen from this particular point and that would be good, I guess. ये बात समझ आई? Yes, you can call me directly, but not today, please. I won't be able to pick your phone calls today. You can probably try it tomorrow. Just don't call me today. You can text me on WhatsApp for sure, and I'll probably try to call you again. But yeah, you can call me tomorrow. Okay? मतलब अभी थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो हम कल बात करेंगे. You can call me tomorrow. That is 9th May or any day. So you can call any day from tomorrow or any day. Around 12 p.m. I would say. This should do the job. After 12 p.m. you can call me anytime. I'll probably try to pick your phone call. Yeah, I told you. After 12 p.m. you can call. And just one thing that I'd like from your end, if you have any doubts, if you have any queries,
do go to the comment section of this video. This video will remain live. You can go and you can watch this video later on as well. Everything would be available over there. If you have any query, you can ask in comment section, or you can call me directly, or whatever makes you happy. Okay, Saurabh, no worries. This is something which I do for the students, and I am doing this for a full time since quite a long time. So it's been more than 4.5 years since I am teaching and guiding students. So I know what all things are important in order to become a good software developer and in order to enter an IT industry. Okay, be it referrals, be it anything. If you need help, you can contact me, irrespective of whether or not you have done the course at Coding Blocks. So of course we teach, but again, if you need help, if you are not in the right mind frame, if you are struggling with your career, if you are not happy with what you are doing, if you want to switch to IT job, you are working in a service based company, anything, you can call me and you can let me know. ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करें. So do like this video, of course. If you enjoyed this session, do like this video. I thought that I have given the in-depth explanation for each and everything that was required and what all things you need to focus on for internship and placement season. I have told you each and everything that I knew would help you for this particular placement and internship season. Recursion video not completed, sir. When next class? So I'll take the next class very soon. Don't worry. नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्दी हो जाएगी. शिवम कुमार सिंह. सो जैसे मैं आज आया तो आई टुक दिस टॉपिक बिकॉज आई फेल्ट मेनी स्टूडेंट्स वांट मी टू इलैबोरेट दिस थिंग. सो वन थिंग दैट आई लाइक टू नो, ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रमोशन भी कर लेते हैं. सो देयर आर बैचेस दैट आर कमिंग फ्रॉम 30th May, right? There are batches that are coming from 30th May onwards at Coding Block. So there are classroom courses, there are live courses. If you are not a student at that live nearby Delhi NCR India, so you can go for live courses. These are also very exhaustive courses. We try to cover each and everything. Once you do these courses, you don't have to do anything else apart from practice in data structures and algorithms. So classroom courses are there, live courses are there, online courses are there. Online courses are quite economical, but again, if you need someone who can guide you, those who can teach you personally, you can look out these courses. There are C++ courses, Java courses, web development courses, many courses which are coming up. Okay. Sir, I am new sub to this channel. Can I call you or text on that number? Yeah, for sure. The unfiltered conversations. Yes, this number is for everyone. Those who are looking for guidance, irrespective of you have done the Coding Block course or not, even if you are doing masters and you need help, even if you are a PhD student and you need help, I'll try to do the best for you guys as much as possible. You can call me anytime. You can, not anytime, but during the day time. So just look whenever you call. So you can text me, you can WhatsApp me. I am available on WhatsApp as well. I am available on call as well on this number. Okay. Chalo, so I think that's it from my end today, guys. Do like this channel, do subscribe to this particular channel. In case you have suggestions, तुम्हारे जो भी suggestions है ना, you want me to make a video or take a next session on whatever topic you feel like, go to the comment of this video and do let me know. I'll go through those comments and I'll try to read those comments and I'll try to bring whatever you'll ask for. ठीक है? Good night, sir. Have sweet dreams. Okay. Good night, you too. Have sweet dreams. ठीक है मतलब sweet dreams का मतलब अभी तुम बोलते हो क्या sweet dreams ही है? अभी भी चल रहा है तुम्हारा? चलो मतलब हमारे साइड तो उतना sweet dreams कौन अब करता है? ठीक है? चलो तो that's it guys. Bye bye. Take care. And कोई suggestion हो, कुछ भी हो जो तुम मुझे देना चाहो, कुछ मेरे से पूछना चाहो, कोई मेरे को चाहते हो कि इसमें मैं वीडियो बनाऊं, मेरे को बताना. बेटा लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी तुम्हारे पर्सनल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, हर जगह बता दो कि सेशंस ऐसे चलते हैं एंड आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग व्हिच आई कैन डू. ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड आई विल मीट यू अगेन वेरी सून
with the suggestions or with the videos and topics that you'll let me know. Bye bye guys. Take care.